Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So with Nifty, the Nifty is now close at 17,590 and almost at 17,600. So during the last week, we observed that Nifty has crossed 17,500, which was the first immediate resistance level. So above 17,500, we believe the next level to watch is 17,800. 17,800 because that is the previous monthly high. So that for maybe though the bias is positive for a time being, or maybe for the intra week, there can be this levels may see some resistance, but then that is only a intra week resistance. The bias is positive, and I believe the higher side we should be heading for 18,000 on the upside. So the on the lower side, there was a gap up in the Nifty on 31st March, and the low of that gap is 17,200. So that should be the range for the Nifty, 17,200 to 17,800. The bias is positive. Any corrections close to 17,400, 17,300 should be viewed as a buying opportunity. Coming to Bank Nifty has closed at 41,000 41,041. So even the Bank Nifty above 40,800, 41,000, it's a very good upside. So Bank Nifty is also, if you look at the previous month high, the Bank Nifty high was 41,625. So net, there can be some resistance close to 41,600. That too from the intra-week point of time. So above 41,600, there is a very huge move which we expect. The Bank Nifty can go till 43,500. So that is the view for the Bank Nifty. If you ask for the support, there was a even in the Bank Nifty there was a gap up on the last 31st of March on Friday, and that gap was at 40,180. So the low of that candle. So we believe this would be the support for the Bank Nifty 40,180. So net, the bias for the Nifty and Bank Nifty both are positive. Nifty we are looking for 17,800, and Bank Nifty we are looking for 41,600, 41,800 for the week. So if you talk of the weekly expiry, there were this for 18,000 and 17,500. This was the extreme positions were seen in the call and put. So that can be the resistance on the derivatives point of view. And same for the Bank Nifty, 42,000 on the call option and 40,500 on the put option. So that can be the range for the Bank Nifty, 42,000 and 40,500. Coming to derivatives data, there was a short covering in Nifty futures in the last trading session to a tune of minus 0.2%, which was a decrease in shares by 24,000 shares. The put call ratio has declined from 1.39 to 1.20, so slight marginal decline. The major additions were seen in 17,600 and 17,400, 17,700 call option, and while the support was seen at 17,500 and 17,600 put option. Bank Nifty, we have seen a long build up to the tune of 2.3%, which is an addition of 63,000 shares. The put call ratio actually declined from 1.17 to 0.97 ratio. So this is slightly a concern because the ratio has come below the one level. Uh, the major additions were seen in the 41,000 put option and then 40,500 put option. So this will be the support. On the higher side, 41,200 and 41,100 call option. So this might act as a resistance. Coming to FI data, so FIs has slightly in the index future, they're about close to 3,000 contract, and this long short ratio has slightly improved from 17% to 18%. So they added a little bit of buying was there. So, but this ratio needs to scale about 25-30%. Then only this will show any significant change in data. So net, the bias is positive. Lower side is 17,300, 17,300, yeah, 17,350 can be the maximum correction, which can be seen in the Nifty. And Bank Nifty, the expected maximum correction is 40,600, 40,800. So the bias is positive for the view. That's all from my end, and I'll hand over to Vishal sir for more research updates. Thank you. Yeah, good morning, team. Good morning, sir. So first starting up with RBI policy, and after raising the repo rate by around 250 basis points since May, IMPC has decided not to raise the repo rate, keeping it unchanged.
This is, I mean, from an interest rate sensitive sector, this is quite positive. On a positive side, if you look at real GDP, GSP growth rate for FY24 has been revised upward by 10 basis point to 6.4. Again, that is on a positive side. And inflation has been revised downward for FY24 by similar trajectory of 10 basis point. And if you look at overall, I think I mean, GSEC bond yield have declined, but when it comes to probably this is what highlighted interest rate sensitive sector whenever they were raising money from the market, so that bodes well for them. Within the pack, I mean, if you look at within the banking space, I think we have a couple of large cap as a buy. And that's all on RBI. Next is on a preview that note that we have released. First is on BFSI, where our topics are ICICI Bank and Manappuram Finance. Quarter 4 is expected to report strong set of credit growth in retail and SME. And I mean, we are expecting a strong set of number from banking space. And if you look at from a further breakup, deposits saw an uptick of 19 basis point in a fortnight basis, and it stood at 10.3 percentage, which was around 10.1 in the quarter, probably fortnight basis back. So that is positive. Next preview on cement. So where our topic is Ultratech. Quarter 4, we are expecting improvement in EBITDA per ton on a quarter-on-quarter basis. That is primarily led by price. Price has been little neutral on the side, but positivity in this quarter will come primarily from the volume growth and then energy prices weakness that we are seeing. And we expect this to continue because companies have taken a price hike, and further, like an imported coal prices, they have further weakened. So that impact of which we are seeing in Quarter 4 will be seen in the Quarter 1 of next year again. Next preview on construction. So where we are positive view and topic is Edge Infra. Construction space, if you look at the road construction company, we are expecting a single digit revenue growth, but for Edge Infra, we're expecting a pretty strong set of revenue growth. And if you look at from building construction space, revenue growth is expected to be 20% plus, led by Ahluwalia, NCC, and PSP projects. Next is on metal and mining, where we are viewing things to be neutral. I mean, if you look at domestic steel prices have increased by 300 rupees per ton, in line with the recovery in global steel prices. For steel companies, Quarter 4 profitability is likely to be improving on a quarter-on-quarter basis. And however, I think what we understand is iron ore and coking coal prices are likely to be partially offset the higher steel prices for them. So that's why we are maintaining a neutral stance on the preview. Next is on IT. So IT, I mean, we are topics is Infi and Coforge. The thought process in IT space will be particularly on how exactly the company is guiding for the year ahead, because FY24 guidance, company will be making some bit of announcement. Macro side, things are worsening. Now, only thing is to be seen, the same thing companies are highlighting in their commentary, or probably they are giving neutral kind of commentary. So the stocks in the IT pack, they are sold off quite sharply in the last, I'll say, 2-3 quarters. So any neutral to positive stance will be positive for IT stock performance. Next is on preview mid cap. So positive. Expecting a positive set of data, and topic is Safari, Prince Pipe, and Astral. And if you look at most of the mid caps in our coverage is expected to report an improvement in their top line on Y&Y basis, led by volume and price hike. And importantly, margin is expected to improve on quarter-quarter basis, as that what we have seen even in the likes of cement. Commodity prices have seen a weakness. So same thing we are seeing in mid caps. Next, I think in terms of news flow, if you look at NMDC, which is on the positive side, the strategic divestment of NMDC Steel is expected to be completed in the first half of this fiscal and may fetch government around 11,000 crore. So anything on that front, if it is seen, then it will be positive for NMDC. And next is on domestic steel mills. Steel mills such as JSW, Tata Steel, Nippon, and SAIL. Others are seeking a reimposition of anti-dumping duty on popular products like coated, rolled, flat steel products. Now, if the same thing is implemented, then probably this will bode well for the domestic steel players. And overall export duty has been nullified by the government, and exports have started to pick up since December. Hence, I think any news flow that comes, that will be seen positive for domestic steel manufacturer. Next bit of news flow is on
I mean, if you look at Ramakrishna Forging, where is positive set of commentary has come, which is like, consortium of Ramakrishna and Tata Titagarh Wagon. They have jointly received an LOA from Ministry of Railway for the manufacturing of forged wheel under long-term agreement. The order value is pretty huge at around 12,200 crore and is to be executed over the next 20 odd years. And so that is pretty positive. I think if it is positive for both the companies. Next is on Harsha Engineers International, where company has commissioned a hybrid power plant, executed an agreement with JETCO for sale of power. So that is a positive. Next is on Sudarshan Chemical, which is a positive development. Company has sold its land parcel for of 5.76 acre in Pune to Birla Estate. And if you look at the consideration that it will receive is 356 odd crores, and that will be used for repairing of or probably reduction of a debt as well as doing a capex plan going ahead. Next is on MDL. So Majgaon Dock has recorded a turnover of around 7,547 odd crore, which is a growth of around 30% on top line basis, which is quite positive. So all in, I mean, if you look at defense companies, they've reported a pretty strong set of numbers in terms of expectations for FY23 even in the Q4. Last thing from my side is on Sona Comstar, which is on a positive side. It will be investing 53 crore for the expansion of new plant in Pune. Company, if you look at, has a total order book of around 23,800 crore as on December, and existing capacity utilization of the plant is 65%. So I mean, expansion which they are doing in Pune will be completed in 2025, and this will further help to further do a revenue growth. We have a positive view on Sona Comstar. Yeah, that's all from my side, and I'll hand it to the team now. Over to you. Good morning, everyone. The government came with a new gas pricing. So APM gas prices have been cut. Following that, MGL, IGL, Gujarat Gas, Adani, Total Gas, everybody has cut gas prices. MGL has done a major cut. Now, so they cut CNG by 8 rupees and PNG by 5 rupees in Mumbai. So this is very positive for gas companies. We like IGL, MGL, Gujarat Gas at current level. Even Petronet and GAIL are few companies which will benefit from low gas prices. This is something to note. VBL has proposed to invest 1,100 crores in Gorakhpur, UP, for which UP CM laid a foundation stone. So this is work in progress because they need to get a lot of approvals also. In real estate, there are a lot of news. So in one news, Godrej Property had said, it has done its best ever quarter for sales booking and cash collection. Q4 FY23 booking was 4,051 crores. FY23 booking was higher by 56% at 12,232 crores. Cash collection was higher by 41% in FY23 at 8,991 crores, whereas cash collection in Q4 FY23 is 3,822 crores. And they have said that they have added 18 new projects for FY23, estimated saleable area of nearly 29 million square feet. So estimate of the sale or booking value in future date will be 32,000 crores. This is very positive. And even Loda came with their numbers. So that also has been very positive. Larsen & Toubro has emerged as the lowest bidder for long overdue redevelopment of New Delhi railway station. The bid was for 8,740 crores. It was 3,000 rupees higher than government estimate. JSPL promoter group has they have fully recouped their shares. They have pledged their shares. They have recouped that. Mahindra Global Tractors Program, codename K2, will be launched under the brand name OJA and will include 40 tractor model for Mahindra Future Ready lineup. And it is all international model, and that is very positive. Paras Defense has received a type certification from
GCA, Director General of Civil Aviation. This is for drone technology for 25 kgs below drone for agriculture purpose. Positive for Paras. Paras trades expensive, but future growth is likely to be very good. So long-term investor can accumulate this. Muthoot Finance has announced a dividend of 22 rupees. And I think Gold Finance margins, NIMs will start to improve. We can look at Gold Finance. RVNL and Siemens Consortium has emerged as L1 bidder for Mumbai Metro Line 2B of MMRDA for the project cost of 378 crores. 60% will be for Siemens, 40% for RVNL. It is a substation. Titan provisional numbers growth was 25% revenue growth, and they added 126 stores, taking the total to 2,488 stores. Jewelry business saw 23% growth, adding 31 stores, and they have a total of 541 stores in jewelry business. Core watches and wearables segment saw a very big growth of 41%. They added 52 stores at 1,005 stores. Eye care business sales was higher by 22%. Shakti Pumps received patent for inventing switching circuit to start single phase induction motor from Government of India. Engineers India has got a small order of 31.5 crore in Abu Dhabi. Thyrocare has announced a dividend of 18 per share. Alchem Lab US FDA inspection at the company API manufacturing facility located at Ankleshwar, Gujarat. There is no issues. No 483 was issued. So positive for Alchem Lab. Century Textile has informed that they bought a land of 5.76 acre in Pune, which has a potential to develop a 1.5 million square feet with a revenue potential of 2,500 square feet. So they bought the land at 356 crores. So when they develop, it is going to be positive. Sobha announced highest ever annual sales of 5,198 crores, 5.65 million square feet, with the average price realization of 9,200 square feet. So very good numbers from Shobha. But we are not gungo about Shobha. We like Godrej Property, Oberoi Real Estate, Kolte Patel. We like Brigade, Prestige. Even Phoenix Mills are something which is different, and these will give us different returns also. And Adani Wilmar has said FY 23 revenue was 55,000 crores, higher by 14%. With that, over to you, team. थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने नई गैस वैक्सीन लागू कर दी है। सो बेसिकली इम्पैक्ट आ गया एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस और एजीटीएल। एमजीएल में देखा जाए सबसे मेजर कर दिए, जो कि सीएनजी में 8 रुपीज के आसपास तक कर दिए और पीएनजी में 5 रुपीज तक कर दिए। सो ओवरऑल ये पॉजिटिव न्यूज है ये स्टॉक्स के लिए। और इसी स्पेस में हमें ये सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, जैसे पेट्रोनेट एलएनजी को भी फोकस रख सकते हैं, गेन इंडिया, एमजीएल, आईजीएल के लिए। नेक्स्ट न्यूज है वीबीएल ने एक नया अपना फैसिलिटी ओपन कर रहा है गोरखपुर में। 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। यूपी की सीएम ने स्टोन फाउंडेशन लीड कर दिया, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वरुण बेवरेजेस के लिए। रियल एस्टेट के भी नंबर्स आगे हैं। सबसे पहले देखा जाए गोदरेज ने सबसे बेस्ट एवर क्वार्टर का सेल्स दिया है, 4,051 करोड़ का बुकिंग्स देखी गई है, 56% का जंप देखा गया। और फुल ईयर का देखा जाए तो 12,232 करोड़ का है फुल ईयर में। कलेक्शन एफिशिएंसी देखी जाए तो 41% हायर थी, 8,991 करोड़ फुल ईयर के लिए। और Q4 में देखा जाए तो 3,822 करोड़ है। टोटल 80 न्यू ऑनगोइंग नई प्रोजेक्ट्स ने स्टार्ट कर दी है, और इनकी जो अप्रॉक्स सेलेबल एरिया है 29 मिलियन स्क्वायर फीट की, और जो कि वैल्यू में कन्वर्ट करती जाती है तो 32,000 करोड़ का आसपास आता है। सिमिलरली लोडा के भी नंबर्स अच्छे थे, और उन्होंने भी सेम ऐसी पैरामीटर्स पे अपने दिए। एलएनटी L1 बिडर डिक्लेयर किया गया है, जो कि रीडेवलप करेगा रेलवे स्टेशन, जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। 8740 करोड़ का उन्होंने बिडिंग दिया है, जो कि गवर्नमेंट के अनुमान से 3,000 करोड़ का हायर बिडिंग कॉस्ट है। ये L1 बिडर डिक्लेयर किया है। जिंदाल स्टील ने भी जो इनकी जो प्लेज शेयर्स है, सारे शेयर्स को अनप्लेज कर दिया गया है। महिंद्रा ने ग्लोबल ट्रैक्टर ओजीए के साथ 40 न्यू ट्रैक्टर मॉडल्स लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में।
आरएस डिफेंस को भी डीजीसीए से अप्रूवल मिल गया है, जो कि एक 25 केजी पिलो ड्रोन बनाएंगे और बेसिकली ये फार्मिंग के लिए यूज होगा। मुथूट फाइनेंस ने 22 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया और इनके अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं। आरबीएनएल और सीमेंस दोनों कंपनीज ने कंस्ट्रक्शन में L1 बिल्डर बने हैं मुंबई मेट्रो के लिए, जो कि 378 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 60% का रेवेन्यू सीमेंस के पास जाएगा और रेस्ट 40% आरबीएनएल के पास जाएगा। टाइटन के भी मंथली अपडेट्स आ गए। अगर हम ग्रोथ रेवेन्यू वाइज देखेंगे 25% का जम दिखा गया है, 25% का जम देखा गया और 26 न्यू स्टोर ऐड किए गए हैं। टोटल 88 नए स्टोर्स अभी को मिला के हो गए। सेकंड ज्वेलरी बिजनेस देखा जाए तो 23% हायर है, जो कि 31 नए स्टोर ऐड किए गए और टोटल स्टोर 541 हो गए। वॉचेज एंड आईवेयर बिजनेस भी अच्छे से कर रहा है। 41% का हमें वॉचेज में जम देखा गया 52 न्यू स्टोर्स के साथ, क्योंकि 1000 स्टोर्स के आसपास पहुंच गया। आईवेयर में देखा जाए 22% का स्टोर और 22% का रेवेन्यू जम देखा गया। शक्ति कंपनी भी न्यू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। थायरो का भी 18 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। आईकेएम लैब्स को भी जो उनकी जो अंकलेश्वर गुजरात की प्लांट है, वहाँ पे यूएसएफ की इंस्पेक्शन हुआ था। इंस्पेक्शन में देखा जाए तो कोई भी नया फॉर्म 83 इशू नहीं किया गया, तो ओवरऑल के फॉर्म 83 यूज किया गया। सेंचुरी टेक्सटाइल ने पुणे में एक नया लैंड पार्सल खरीदा है 5.76 एकड़ का, जो कि 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का डेवलपमेंट होगा और इससे रेवेन्यू देखा जाए तो 28 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहेगा। टोटल देखा जाए तो 356 करोड़ का इनकम। शोभा की भी सेल्स नंबर्स देखेगा, जो कि 5200 के आसपास के सेल नंबर्स है और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो 5.6 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है और एवरेज अगर सेल देखी जाए तो उनकी 9200 की स्क्वायर फीट की बन रही कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पर हमें शोभा इतना पसंद नहीं आ रहा है थोड़ी इश्यूज की वजह से। उनकी जो चल रही कंपनीज में सी स्पेस में हमें देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, कोल्टे फाटल, फ्रिगेरेटर, प्रेस्टीज स्टेज देख सकते हैं। फिनिक्स विल थोड़ा सा ये अलग है बाकी प्लेयर्स से, तो ये सब स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं। अडानी बिल्डर के भी नंबर्स देखे गए FY23 में उनके रेवेन्यू देखे गए 55% को, जो कि 14% हायर थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आरबीआई की पॉलिसी मीट थी और आरबीआई ने इस बार देखा गया तो रेपो रेट टोटल देखा जाए रेपो रेट की रेट हाइक नहीं की गई और टोटल देखा जाए 250 बेसिस पॉइंट 2.5% के आसपास की रेट हाइक की मई 22 से, और उन्होंने अभी 6.5 के ऊपर अपनी जो स्टांस है मेंटेन रखा है और विड्रॉल और प्रोविजन स्टांस के साथ ही रखा गया है। सेकेंडली हम देख रहे हैं जो प्रीव्यू हमने जो बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेस में देख रहे हैं, जो टॉपिक हमारी आईसीआईसीआई और मनप्पुरम फाइनेंस है, ये सीजन में स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। क्रेडिट ग्रोथ की हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है। प्रोविजन फिगर्स देख रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक के 17% हायर है, इंडसइंड बैंक के 21% हायर और फेडरल बैंक के 20% हायर। रिटेल पोर्टफोलियो डिसबर्समेंट की भी डिमांड्स हमें अच्छी आती हुई दिख रही है। होम लोन्स और व्हीकल लोन्स में क्रेडिट गारंटी स्कीम के चलते और वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए जो बेटर कॉर्पोरेट्स हैं उनको और गोल्ड लोन्स कंटिन्यू कर रहे हैं सपोर्ट के लिए। डिपॉजिट ग्रुप में भी हमें अपडेट आते हुए देखा, जो कि 19 बेसिस पॉइंट का है, जो कि फोर्टनाइटली बेसिस पर आता है, जो कि 10.3 पे भी है, जो कि पहले 10.1 पे था। सेकेंडली सीमेंट सेक्टर पे देखेंगे तो एबिटा क्वार्टर हमें लग रहा है एक्सपेक्ट, जो कि क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट है। बेसिकली लो पावर और फ्यूल जो मीन कोकिंग कोल के प्राइसेस डिप होते हुए देखिए, उसके चलते प्राइसेस हमें फ्लैट ही लग रहा है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, जो कि Q4 FY23 का। पर कोर सेक्टर डेटा देखा जाए तो वॉल्यूम में जो 7.3% देखा जाए वाई पे, जो कि रिपोर्टेड हायर है जनवरी 23। जो हमने हमारी इंडस्ट्री के मॉडल के हिसाब से इंक्रीज देख रहे 11% के आसपास है। अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट हमें अच्छा लग रहा है और एसीसी अंबुजा में भी वॉल्यूम हमें सिंगल डिजिट में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी कंस्ट्रेन और जो कि हिमाचल प्रदेश की प्लांट्स में जो स्ट्राइक्स है उसको चलते हैं। कंस्ट्रक्शन स्पेस में देखेंगे तो एच इंफ्रा हमारी टॉपिक रहेगी। सेकेंडली ऑल इंडिया लेवल पे रोड की जो कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट की 4726 किलोमीटर वर्सेस 4622 वाई पे देखे गए। और अगर हम देख रहे तो जो अवार्ड्स है वो भी थोड़ा सा डिक्रीज हो गए 10% ईयर ऑन ईयर पे, जो कि 11,500 किलोमीटर का है। अवार्डिंग हमें लग रहा है बेटर हो सकती है मार्च फंडिंग में, क्योंकि मीडिया कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने बैक ऑर्डर की है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स थे और एनएचएआई से, जो लास्ट वीक मार्च 23 में। और कंस्ट्रक्शन केस में हमें लगता है एवरेज रेवेन्यू से ऊपर थोड़ा सा कवरेज यूनिट्स में आ सकता है, 12% के आसपास की नीचे पास दिख रही है। एबिटा लग रहा है अभी 18% के आसपास का वाई में चल पाएगा। और बिल्डिंग सेक्शन में भी हमें लग रहा है रेवेन्यू 20% से लग सकता है। इसमें हमें अच्छा एलओआर एनसीसी और पीएससी कंस्ट्रक्शन फेस। मेटल माइनिंग में देख रहे हैं तो हमारा चांस न्यूट्रल ही रहेगा। डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में इंक्रीज देखा गया 3000 पर टन में, जो कि इन लाइन है, जो कि रिकवरी और ग्लोबल स्टील प्राइसेस के साथ। स्टील कंपनीज में भी अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी हायर दिखाई है क्वार्टर क्वार्टर, जो कि हायर स्टील प्राइसेस और हायर एक्सपोर्ट्स के चलते और वॉल्यूम्स के चलते। आयरन और कुकिंग कोल प्राइसेस की जो कि सॉफ्ट है वो पार्शियली इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि स्टील प्राइसेस के हायर के चलते।
नेक्स्ट अब आईटी स्पेस में आ जाते हैं। हमारी इसमें टॉप स्पेक्स रहेगी लार्ज कैप में इन्फोसिस और मिड कैप में देखिए जाए तो कोफोर्ड, जो कि मैक्रो कंडीशन देख रहे हैं थोड़ा सा वर्स हो रहा है बैंकिंग क्राइसिस जो कि यूएस एंड यूरोप के चलते थोड़ा सा स्लो डाउन आउट है। देख सकते हैं जो कि टेक्निकल स्पेंड पे जो कि एंटरप्राइजेस ग्लोबली रहेगा, पर हमें लगता है कि ये शिफ्ट धीरे से कॉस्ट कटिंग रिजल्ट और हायर कॉस्ट के चलते कि आउटरीच और वेंडर कंसोलिडेशन में भी जो कि थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी स्पेंड रहेगा बीएफएसआई टेलीकॉम रिटेल एंड हाईटेक वर्टिकल्स में यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आते हुए स्लो डाउन आउट है दिखेगा। तो हमें लगता है कि फर्स्ट हाफ रहेगा ग्रोथ आउटलुक वीक ही रहेगी। और जो Q4 FY23 हमें लगता है जो लास्ट कैप्स है उसमें डॉलर ग्रोथ है जो -1 से +1% के क्वार्टर बेसिस पे जा सकता है सीसी टर्म्स पे, और इसमें एड करेगा या तो 1500 बेसिस पॉइंट या क्रॉस करेंसी जो कि टीम मिलता है। इसमें नेट कास्ट में देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ -1 से 3.5% के आसपास मिल सकता है ऑर्गेनिक ग्रोथ में। सीसी टर्म्स में ये भी रहेगा जो कि 30 बेसिस पॉइंट से 150 बेसिस पॉइंट के आसपास क्रॉस करेंसी के साथ। अगर हम बाकी देखेंगे जो मिड कैप स्पेस में अगर स्टॉक्स देख रहे हैं तो सफारी, प्रिंस स्पाइस, एस्ट्रल और एपी अपोलो हमें लग रहा है मिड कैप कंपनीज हमारी जो कवरेज रिपोर्ट में है उनके जो टॉप लाइन्स है ईयर बेसिस पे हायर आते हुए दिख सकती है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस हाइक्स की चलती है। देखिए बेसिकली इसमें रहेगा जो क्वांटम ऑफ मार्जिन है वो इम्प्रूव हो रहा है। कमोडिटी प्राइसेस जो हमें लास्ट 6 मंथ में थोड़ी गिरती हुई दिखेगी तो ये थोड़ा सा उनको एक करेगा। हॉस्पिटलिटी कंपनीज में भी डिमांड बहुत रोबस्ट थी और ये अपट्रेंड पे रख रहा है जो कि ऑक्यूपेंसीज और एडीआर के लिए। सेकेंडली हम जो एग्री बिजनेस दिख रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग कॉर्नर रहेगा, जो उनका जो आउटकम है वो भी हमें लगन एंटीसिपेट करें जो सेल्स है वो थोड़ी सी म्यूटेड आ सकती है पाइप कंपनीज के लिए। डोमेस्टिक स्टील मिल्स ने भी कहा कि जो कि जैसे जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील और निप्पॉन स्टील और स्टील ने कहा कि रीइंफोर्स करे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कि पॉपुलर प्रोडक्ट्स है जैसे कोटेड हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स और कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स के लिए, और ये इम्पोर्टेड रहेगी लार्ज नंबर्स के लिए और कैटेगरी वाइज शिपमेंट देखे जाएंगे 17 से 74% ओवर लास्ट ईयर। So overall, that's it from my end. Thank you everyone for attending the morning call. Yaman, namaskar.